बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर्स, इंफॉर्मेटिव वर्ल्ड में वेलकम। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के प्रैक्टिस सेशन की, जिसमें मैं हमेशा आपको पता है कि प्रैक्टिस करवाती हूँ इन द एंड ऑफ सेंटेंस के affirmative, negative और interrogative for better understanding, right? So now we start our practice session. Affirmative, then negative, and then interrogative. Now, number one example. I had made this dish. I had made this dish. Negative. I had not made this dish. Interrogative. Had I made this dish? And in the last question mark. What is the meaning of that sentence? I had made this dish. मैं ये डिश पका चुकी थी. I had not made this dish. मैं ये डिश नहीं पका चुकी थी. Had I made this dish? क्या मैं ये डिश पका चुकी थी? बना चुकी थी. मतलब कुक्ड होता तो पका चुकी होता. यहाँ हम मेड की बात करें तो बना चुकी थी, राइट? Now the second one example. He had gone to office. Next one. He had negative not gone to office. Interrogative. Had he gone to office? And the last question mark. वो ऑफिस जा चुका था. नेगेटिव. वो ऑफिस नहीं जा चुका था. इंट्रोगेटिव. क्या वो ऑफिस जा चुका था? ठीक है. He had gone to office. He had not gone to office. Had he gone to office? Now the third one example. We had watched that movie. Negative. We had not watched that movie. Interrogative. Had we watched that movie? And the last question mark. Meanings. We had watched that movie. हम वो मूवी देख चुके थे. We had not watched that movie. हम वो मूवी नहीं देख चुके थे. Had we watched that movie? क्या हम वो मूवी देख चुके थे? Like that. Now the fourth one example. बनाने का मकसद, प्रैक्टिस सेशन का मकसद यही है कि इसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने भी बिल्कुल सेम इसी तरह से करनी है जिस तरह से मैं करके दिखा रही हूँ. कि आप लोगों ने एक अफर्मेटिव सेंटेंस लिया, पहले तो माइंड मेकअप किया उर्दू में, उसका अफर्मेटिव बनाया, देन नेगेटिव, देन इंट्रोगेटिव. सही. Now the fourth one example. You had made her fool. Sorry, you had. Okay, you had made her fool. You had not made her fool. Had you made her fool? In the last question mark. Meanings. You had made her fool. तुम उसे बेवकूफ़ बना चुकी थी. You had not made her fool. तुम उसे बेवकूफ़ नहीं बना चुकी थी. Had you made her fool? क्या तुम उसे बेवकूफ़ बना चुकी थी? Now the fifth and the final last one. Sana had
rung the bell. Sana had not rung the bell. Had Sana rung the bell? Last question mark. Sana had rung the bell. Ring, rang, rung. Third form. Sana had rung the bell. Sana bell बजा चुकी थी. Sana had not rung the bell. Sana bell नहीं बजा चुकी थी. The third one. Had Sana rung the bell? क्या Sana bell बजा चुकी थी? ठीक. तो इस तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव की. ये था हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस के तमाम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव इसके प्रैक्टिस सेशन. नाउ हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं और जो कि होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस. सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.